आज मैं भी जल्दी उठ गया। ऐसा है क्या? मतलब रोज देर से उठने की आदत। वो आज मैं लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया। आज मैं 5 बजे उठ गया था। टुडे आई वोक अप टू अर्ली। रोज इस टाइम पे सोने की आदत है। वो सबसे पहले एक सेकंड तो ठीक कर उसको। तो यार सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हूं, और वो बंदा जिसे गेंशिन इम्पैक्ट खेलने में बहुत मजा आता था, अब आता है, था भी। आज तो उठा ही नहीं, एक सोया ही नहीं। वो दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा थके होगे मे बी, या फिर नहीं भी, क्या पता। बट या आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया तो मैं थका हुआ नहीं, पर मुझे नींद से आ रही है। मैं बोला कि सोने से अच्छा स्ट्रीम कर लूँ, गप्पे लड़ा लूँ, और गंजेड़ी इम्पैक्ट में थोड़ा सा और प्रोग्रेस कर लूँ। नहीं तो फॉन्टेन आने से पहले अगर चीज़ें नहीं निपटी तो मैं निपट जाऊंगा। सो या तो इसी के साथ आज की लाइव स्ट्रीम का प्रारंभ और प्रचंड तरीके से शुभारंभ करते हुए हम बढ़ते हैं वही डेली ग्राइंड की तरफ। इट इज व्हाट इट इज। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। मुझे पहले डेलीज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डेलीज नहीं किए तो मैं बाइजू की क्वेस्ट नहीं खोल पाऊंगा। मुझे की चाहिए बाइजू की क्वेस्ट के लिए। फुल कैफीन के नशे। ओह ये इट इज व्हाट इट इज। और आप लोग कुछ पुल वुल करने वाले हो? भाई ये मत बोलना बुशित भाई, पुल्स के लिए प्रीमोज नहीं है ये। आप लोगों को पुल्स की क्या दिक्कत? 10 पुल में 5 स्टार निकाल लोगे। अब इस वैन मेरा हो गया में। मॉन्स्टेड में नहीं है डेलीज, मेरे नहीं, मैं सुमेरु में रखता, इजी पड़ता। भागो रे भागो रे भागो। अरे मेरा भी कर दो, कुछ करो। खत्म। ऐसा क्या अनित भाई? अरे आप बोल रहे हो मतलब नहीं देगी? वो ओ सच। 2 मिनट पीसी से आता स्ट्रीम पे। वो अमीरी भाई, अमीरी पीसी से आता। काश मैं भी इतना अमीर होता। 4090 वाला पीसी अमीरी है तो 4090 है। तो मैं एक चीज तो ऑन करना भूल गया बेटा। चलो तब तक ये हो रहा है तो डेलीज निपटाता। क्या इधर मशरूम होगा ना? चलो मशरूम वाली क्वेस्ट निपटाते। कल मेरे से कोई पूछ रहा था आरनारा वाली क्वेस्ट के लिए, ये बुक दिखाओ अपनी आरनारा वाली। मैं दिखाना भूल गया था, लेकिन वो आरनारा वाली बुक होती कहाँ है? क्या पूछा था आरनारा वाली बुक दिखाओ। फुल्स तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत बोलो। आपके पास पुल्स नहीं तो कोई बात नहीं ना। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो है। प्रणाम गुरुजी। ऐसा है क्या? मिडनाइट
और पुल किया कुछ स्टार रेल में, या आप भी हमारी तरह काफका का वेट कर रहा है? ब्लेड निकाल लिया। नूस ब्लेड बाय ब्लेड पुल कर रहा हूँ। विश मी लक। मैं आपको विश करता हूं कि आपको आपका ब्लेड मिल जाए। अरे सब निकाल लिया सिल्वर वुल्फ को छोड़ के, जिंगवान लोचा ब्लेड। देखो मैंने इतना देखा कि हर पैच में एक पिटी बिल्ड हो जाती है, तो हिट कर दो। मैंने भी देखा हर पैच में इतने पुल दे रहे हैं वो उस गेम में कि एक पिटी हिट हो जाती है फ्री टू प्ले के लिए। कर दो हिट। सही है भाई उधर ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ अभी मैंने 2-3 दिन से स्टार्ट किया है, जब भाई स्टार्ट करना। नॉइस नॉइस नॉइस। अरे मेरा तो लक अच्छा। हाँ क्योंकि तूने अगर नहीं नहीं तूने सिल्वर वुल्फ और लोचा दोनों पुल किया पैच किया, एक पैच में दो। पहले पैच में सीली और वो था जिंगवान था, दूसरे पैच में सिल्वर वुल्फ और लोचा था बैच किया। हाँ ठीक है, हो सकता है। मुझे बिल पुट करोगे? नहीं सुमित भाई, मैंने अभी स्टार्ट किया है काफका के लिए, मैं काफका के लिए सेव कर रहा हूं। सो अभी ब्लेड नहीं, अभी काफका। जिंगवान E1 सीली E2 है पैस किया। हाँ ये फिर लकी है। नहीं मैंने जब आखिरी बार स्ट्रीम की थी तो बताया था, दादी की बरसी आने वाली थी मेरी, तो उसके वजह से घर में कंस्ट्रक्शन वक्शन काम था, वो मैं ही पूरा देख रहा था, तो उसकी वजह से स्ट्रीम्स मेरी मोस्टली बंद ही हो गई थी। और फिर जब बरसी हुई तो पूरे लोग वो गए थे, तो उसमें ही था पूरा। फिर जब वो पूरा ख़त्म हो गया उसके बाद जब टाइम मिला तो फिर मैंने बिकॉज रूम में बुताई हुई थी, नया दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए और अब लाइट वाइट सही करी और बैकग्राउंड सही किया और अब प्रोफेशनल लुक आ गया। नमस्ते नमस्ते सुमित, सब मिल जाएगा, खेलो अब। ऐसा है क्या? आज एनी हाउ स्ट्रीम एंड तक रुकूंगा। नाइस वन। अरे बाय द वे गॉड साइनो बिल्ड हो गया मेरा, अब स्टाफ चाहिए। बैस क्या आज मैंने बताया अबिस फिशल और बेडू से ट्राई किया। 5 स्टार जितना टाइम 5 स्टार को लगता है उतना टाइम उनको भी लग रहा है। दिल से दर्द हुआ मुझे अपने लिए। अटैक साइड से 300 EM है, ये सही है। अगर मैं अभी खेलना शुरू करूँ तो कुछ बढ़िया मिलेगा? हाँ काफका के लिए ट्राई कर सकते हो या ब्लेड के लिए भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पैक में तो एक जाओ जैसी यूनिट आ रही है एक। लाइट 20 आया हो, फ्रेंडशिप के लिए कर रहा हूँ। अटैक सेंस का 300 EM और फिर नाइदर से भी मिल जाएगा। जाओ जैसी यूनिट दिखने में दिखता है सिर्फ जाओ जैसा वो। किट मुझे भी नहीं पता। मी बैक फ्रॉम पीसी आपको। वाओ ऑल ऑफ कंसीडर्ड। हाँ ये आईडी पे कितने पुल्स हैं? ये आईडी पे 571 77 एंड 20। अरे सब तेरी गलती है फ्रिज लॉक। अब ये प्लीज कोई सवाल मत पूछना किसको C6 करोगे भाई, किसी को नहीं। इतने पूछ देख के लोग ये पूछते किसको C6 कर रहे।
Should I build Shane if I have Ayaka? Huh, why not? Not just Ayaka. Shane is for like Shane is a premium cryo support. So yeah, not just Ayaka. In future और cryo units आएंगी if Shane synergizes with them. मैं नहीं पूछूंगा किसको C6 करोगे भाई, ऐसा है क्या सर? उसमें भी कौन सा क्या? हाँ, उसमें कौन को आइडलॉन कहते हैं, टूटे हुए मिरर्स के टुकड़े हो। बस एक गैम्बिट एंजॉयर, ऐसा है क्या? काश गैम्बिट जैसा कोई प्लेयर आ जाए इधर। बताए सुबह मेरे अलावा कोई सर्वर इनवाइट नहीं दे सकता। और प्रथमेश चने का डोमेन मतलब किस चीज का डोमेन? वैसे करना चाहते हो किसी को? मैं अगर हाइड्रो आर्कॉन का C2 बहुत अच्छा हुआ तो आर्टिफैक्ट्स शैने को मैं तो 4 पीस नोबलेस रिकमेंड करूंगा विथ फवोनियस अटैक। आर्कॉन कितने कर लिए? मेरे पास सारे मेन पे C0 C2। अरे मैं एक चीज बोलूं, रिक्वेस्ट अब बाइजू की बची है। आज मैंने फारूजान को आज मैंने कुकी को 90 किया, ठीक है, और मैंने कुकी को लाइक रेडन की जगह यूज किया हाइपर ब्लूम में। मुझे मजा नहीं आया, दैट्स ऑल। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, मे मैंने अभी नया स्टार्ट किया इसलिए मेरे से नहीं हो रही है। शायद इसलिए ना हो रही है, अभी नया यूज करना ट्राई किया इसको। लेट्स गो, ऐसा है कैनेटिव है, एक गेम में और बर्बाद। बट शी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। फन में रेडन हो सकती है। नहीं मुझे उस पर्पस से नहीं लगी। क्या ना, कुकी का हर 1.5 सेकंड में प्रॉक होता है ना ये, और रेडन का हर 0.9 सेकंड में प्रॉक होता है, तो वो बस वही उसकी वजह से मेरा अभी मेरा लाइक माइंड सेट नहीं हो पा रहा है। जस्ट दैट। अटैक एंड नो क्रायो डैमेज पर उसने जगह शने सपोर्ट है, जो उसका बफ है वो अटैक परसेंटेज के बेसिस पे मिलता है, सो नो क्रायो डैमेज। जिसका बफ होता है जिंचू बिल्ड मेरा सैक्रिफिशियल, 2 एम्बलम, 2 ग्लैडिएटर, 60, 135, 180। कल नाइदा ने 56 के स्प्रेड मारा। नॉइसू, अरे वो हो गया ना। चाबी अभी ओ मैंने अभी कमीशन ली।
ये 2 मिले कि 3 मिले मुझे? देखा नहीं मैंने, कितने मिले गाइस? 2 मिले थे कि 3 मिले थे? 9 थे, फिर 2 मिले, 11, 2 मिले, ठीक है 2 मिले। नहीं 3 मिले, 3 मिले, ठीक है 3। एरेमाइट्स है, रीच द लिमिटेड है। मतलब कुकी को लेवल अप करना चाहिए क्या फॉर नाइदर टीम? लेकिन मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मतलब लाइक अभी स्टार्ट किया मैंने कुकी से खेलना। अगर तू रेडन यूज कर रहा है तो तुझे पता नहीं मजा, मुझे अभी स्टार्टिंग में तो मजा नहीं आया कुकी से खेल के। अगर तू नाइदा का हाइपर ब्लूम तो यूज करता है रेडन के साथ, अभी तो मुझे लाइक कुकी के साथ खेल के मजा नहीं आया उसमें। हेलो, अरे आप इस समय क्या फ्री हो गए? अरे मोहित भाई क्या, अरे भूषित भाई क्या हाल चाल? बड़े दिनों बाद गुरुजी आप हवेली में आए। ओह हाँ, सारे काम वाम निपटा लिया ना मोहित भाई, अब वापस से मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। और आप बताइए, और वैसे आपसे मॉड लेने का समय आ गया है। लीक देखा? हाँ, नाइस लीक। इससे बड़ा लीक तो मेरे 5 में हुआ था। क्योंकि वेस्ट है विद नाइदन आयातो। अरे हाँ यार, मैं आयातो के साथ यूज करता था, मैं यलान के साथ यूज करता। हाँ ये भी अच्छा आइडिया तूने दिया। अरे हाँ तूने आइडिया सही दिया। मैं एक बार अभी मैं आयातो से ट्राई करके देखता। नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। मैं आयातो के साथ तो ट्राई करना भूल गया। समीर किंग के निकलने के टाइम पे हाउस टाइम दिया था। कुछ भाई मॉड पिछले साल दिया था। टावर ऑफ फैंटेसी पिछले साल आया था ना? हाँ पिछले साल था ना टावर ऑफ फैंटेसी, क्योंकि मैंने अभी टावर ऑफ फैंटेसी कल खोला तो उसमें क्या लिखा था, मैं टावर ऑफ फैंटेसी 156 डेज बाद खोल रहा हूँ। नहीं, मैं जब टावर फैंटेसी अभी खोला तो उस पर लिख के आया था 156 डेज बाद मैंने टावर ऑफ फैंटेसी खोला है, मतलब आधा साल हो गया है। और अगर जुलाई खोले तो आधा, मैं क्योंकि मैंने जब नेमेसिस का रीरन था तब मैंने बंद किया था, और टावर ऑफ फैंटेसी अराउंड अगस्त या सितंबर के बीच में आया था, जितना मुझे याद है। 2 साल नहीं हुए अभी, टावर फैंटेसी को भी 2 साल नहीं हुए ग्लोबल रिलीज हुए। हाँ अगर आप वो चाइना प्लस ग्लोबल हो गए तो हो गए, बट लाइक सिर्फ ग्लोबल अभी नहीं हुए, ये था मुझे लगा। गेम अच्छी चल रही है या खत्म हो गई है? मतलब लाइक पीपल आर प्लेइंग इट, बट ऐसा नहीं है कि वो स्काई रॉकेट मारी हुई है ऐसा। अरे हाँ मैं आया तो से देखूं। आज मैंने ये टीम खेली भाई। आज मैंने क्या किया, आज मैंने बस ऐसे गया, बेडू को रेडन के आर्टिफैक्ट्स पकड़ा दिए। मैंने बेडू को पकड़ा, बेडू को मैं से रेडन के आर्टिफैक्ट्स पकड़ा दिए। पर अच्छा बोला यार, यलान की जगह पर आया तो यूज करके देखता। नाइस चॉइस। मुझे आया तो ध्यान में क्यों नहीं आया। नबमी
आ गया नाहिदा आया तो कुकी। पहले डिफेंसिव ऑप्शन खेल के देखते हैं, उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि सही नहीं हो रहा तो यहाँ पे जोंगली की जगह पर रख के देखूंगा। ब्लेड आएगा ईयू पे भी, हाँ वो भी। साइनो हाइपर ब्लूम खेलो, नाइस नाइस जोक। मैं मेरी टीम खेले, मुझे हंसी आ रही थी भाई, मैं क्या खेल रहा हूँ। वो देख कुकी का स्टार्ट ही नहीं हुआ। या ये लांस से ज्यादा यहाँ पे अच्छा मुझे आया तो लगा। ये लांस से ज्यादा अच्छा है मुझे आया तो लगा। मैं ये लांस से ट्राई कर रहा था, मुझे लाइक कॉम्बो अच्छा फील नहीं हो रहा था। या आया तो फील्स बस नाइसर यार। मैं 400 रुपये केयर लगा लेता हूँ। मैंने रोजाने रखी थी एक बार देखने के लिए। या इस बार, हाँ इस वाले अभी में अगर मैं जोंगली नहीं भी रखूंगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार वाले अभी में ऐसा बस एक ही चीज है जो कूदती फांदती है, वो इलेक्ट्रो वाला। उसके अलावा कुछ कूदने फांदने वाली चीजें नहीं है इस गेम में। तो अगर वाला निकल गया, मेन क्या होता है ना, वो 12-3 में फंसता है कभी कभार। अच्छा उंगा बुंगा नहीं खेल सकता मैं 12-3 में। अरे कहाँ बचा है? एक ये है, दूसरा कहाँ है? एक ही बचा है क्या? एक ही कमीशन जाएगा। कुकी पे कितना ही है मैं? अगर मेरा वो हो जाए,
अगर मेरा ये सेट पूरा हो जाए, अगर मेरा एम्बलम की जगह याला मुझे लग यहाँ पर पीस मिल जाए गिल्डेड का, तो 1000 हो जाएगा। 80 उधर मिलेगा, सीधे 1000 पहुंच जाएगा। जाइफोस, अगर तेरे पास जाइफोस है तो काजुआ के लिए जाइफोस कर बस। मेरे काजुआ पे 200 ही एनर्जी रिचार्ज, सॉरी 205 एनर्जी रिचार्ज है। जाइफोस से 30 मिलता है, 170 का रोना मेरा, अगर है जाइफोस तो। अगर एक और जाइफोस मिले तो मैं कुकी को दे दूं एक और जाइफोस। आजकल मुझे मेरा बस अभी एक ही वेपन लेवल अप और करना है, वो फवोनियस बो। क्योंकि कभी बार सोचा कि मेरे 2 कैरेक्टर्स को फवोनियस बो चाहिए होती है, तो गोरो को भी चाहिए होती है, यलान को भी चाहिए होती है, और कभी कभार दोनों को यूज कर रहा हूँ तो फंस जाता हूँ। अब बस काया C6 करना है, C5 हो गया मैच की। आप मेरा बताएं, मैं क्योंकि मैं उससे निकालता नहीं हूँ ना, तो अभी तक मेरा काया C1 ही है। कब आ रहा है रिशलॉक काया? आने वाला है क्या? नहीं, मैं भी निकाल लूँ क्या? मुझे 4th तो स्टैंडर्ड से मिला, मुझे अब मुझे स्टैंडर्ड से जाके 1 मिला है काया। ब्लेड का बैनर आ गया? हाँ हाँ, सुबह देख लिया मैंने। 600 वो प्रीमोज मेंटेनेंस के निकाल के आ भी गया मैं। आखिरी वाला इधर था, कहाँ है आखिरी वाला? कौन सा वाला है ये? म्याऊ म्याऊ, ओ म्याऊ म्याऊ है। ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो काफका के लिए वेट करा। काफका का जो बैनर है भाई, मस्त बैनर है भाई। काफका का पूरा बैनर ही भाई डॉट से भरा हुआ है। वैसे कोड, हाँ कोड यूज कर लिया। थैंक यू, बट कर लिया वाला कोड 50 जेम्स वाला ना। जल्दी जल्दी। पता आपने इवेंट कर लिया? मैं अभी इस मेन इवेंट को तो भी 1 महीना है भाई, सबसे आखिरी में निपटाऊंगा, आखिरी हफ्ते में निपटाऊंगा क्ली वाला इवेंट। पहले बाकी पुरानी चीजें से निपटा रहा। मैंने अभी कर लिया, काय की स्किल ले ली ना। थैंक्स फॉर कोड। ये ऐसा है क्या? वो भी गिल्डेड कम करता कैसे है एग्जैक्टली? 4 पीस गिल्डेड तुझे रिएक्शन करना होता है यार। Within 8 seconds of triggering an elemental reaction, the character equipping this will obtain buffs based on elemental master of party. So hyper bloom में कुकी hyper bloom करेगी,
तो जैसे ही हाइपर ब्लूम होगा कुकी को ये बफ मिलता है। तो जो पहला वाला हाइपर ब्लूम होगा उस पे ये बफ नहीं होगा, उसके आगे वाले हाइपर ब्लूम पे होगा। लेकिन विद इन 8 सेकंड ऑफ ट्रिगरिंग एन एलिमेंटल रिएक्शन, तो पहला एलिमेंटल रिएक्शन ट्रिगर होने के बाद तुझे ये बफ मिलता है, और ये बफ 8 सेकंड तक परसिस्ट करता है, तब तक लाइक ये इसको तो रीप्रॉक नहीं कर सकता। जब ये 8 सेकंड के बाद खत्म होगा उसके बाद प्रिक होगा। द इफेक्ट कैन बी ट्रिगर्ड वंस एवरी 8 सेकंड। In a second of triggering an elemental reaction, the character equipping this will obtain buffs when the elemental master of party। तो मान लिया अगर जो एलिमेंट उसका है उसके अलावा जो है तो तुझे EM मिलेगा, सेम है तो अटैक मिलता है। The other party on the obtained buffs based on the elemental type of the other party member। Attack is increased by each party member whose elemental type is the same। बट हाइपर ब्लूम में एक ही इलेक्ट्रो रखना होता है तो कभी सेम होता नहीं है, तो 3 अलग अलग एलिमेंट की मतलब 3 उसके अलग होते हैं, तो 150 एलिमेंटल मास्टरी कर सकते। सॉल्स्टिस किया नहीं, एक चीज और लिखी होगी इसमें। मेन चीज है द कैरेक्टर हु इक्विप्स दिस कैन स्टिल ट्रिगर इट्स इफेक्ट व्हेन नॉट ऑन द फील्ड। तो कुकी के ई की वजह से प्रॉक होगा हाइपर ब्लूम, तो भी कुकी को मिल जाएगा लाइक ऑफ फील्ड रहते हुए। काफका कौन है लिखा तो है उसके नीचे, अब सब बोलना पड़ेगा क्या? अरे मॉब्स जस्ट गूगल इट, कम ऑन यार, मैं सिर्फ बताऊंगा उसके। अच्छा तू 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 वर्बल एक्सप्रेशन की जगह विजुअल एक्सप्रेशन ले ले, समझ जाएगा। I like verbal expression now tell। नहीं हो गया, अब चटको। नब यू आर ला, ठीक है ला मी नब, सो यू आस्क मी सो व्हाट आर यू। See today don't ask me question because today I sleepy। कैजुअल डबल क्राउन करना वर्थ इट है? देख अब विशाल, मैं तेरे से अब मैं विश्लॉक तेरे से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या तेरा काजुआ ईएम काजुआ है या क्रिट काजुआ है? हेलो येडम्बा, ईएम। अब ना अगला सवाल तेरा मेरे से, मारे आंखें और मारे बटन है। क्या तेरा भी काजुआ का कुछ CRCD ऐसा दिखता है? हाँ
तो क्राउन करके कोई फायदा नहीं है, क्या ही डैमेज करोगे। ये देखो मेरे काजुआ का टैलेंट्स 111। बस 70K का लैपटॉप लो या 70K का आसूस रोग एलाई। वो आसूस रोग एलाई क्या मोबाइल फोन है क्या? मैं तो बोलूंगा लैपटॉप लो, लैपटॉप, और फिर वैलोरेंट खेलना। एलाई आसूस का PSP नहीं है, लैपटॉप लो, लैपटॉप। ठीक है, सॉरी, हैंडहेल्ड डिवाइस है, नहीं लैपटॉप लो, लैपटॉप। लेकिन उस पे सब पीसी वाली चीजें चलती हैं, बट वो लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है ना, हैंडहेल्ड है। अच्छा, उसके स्पेक्स एक लैपटॉप से कम ही होंगे। क्यों? सिंपल रीजन है, आप CS पढ़ रहे हो। किसी भी सर्किट को जितना छोटा करते जाओगे तो क्या होगा? वही हो रहा है उसके साथ। कंप्यूटर एक इतना बड़ा सर्किट है, लैपटॉप का सर्किट इतना है, हैंडहेल्ड का सर्किट इतना है, कितना भर लोगे उसके अंदर? भाई वो ऑप्टिमाइज हुआ है गेमिंग के। तो ऐसा है ना विशाल भाई, तो आपको जो लेना है ले लो, मेरे से मत पूछ, ठीक है? आप अपनी रिसर्च कर लो और जो लेना है ले, मेरा सर मत चाटो। क्या करना था मुझे? बताया था भाई, मे भी आपने शायद रोग एलाई देखा था जो स्पेक्स के लिए। फिर भी लैपटॉप कौन सा सही रहेगा? आप 2 दिन पहले पूछते, अब आपको रुकना पड़ेगा लैपटॉप्स के लिए, क्योंकि अमेजन की सेल चल रही थी, अब वो ख़त्म हो गई है। प्राइम गेमिंग 16 से 15-16 तारीख को था। अब कोई भी लैपटॉप लोगे महंगा पड़ेगा। अब इंडिपेंडेंस डे का वेट करना, फिर आएगी सेल अमेजन पे, तब उठाना। HP, लेनोवो और कौन सी कंपनी है? HP नहीं, लेनोवो नहीं, HP एसर होती है ना, एसर का नाइट्रो होता है ना। हाँ एसर। आसूस का टफ। इनमें से कोई भी देख लो, 70,000 में आपको 3050 ये TI के अराउंड चीज़ें मिल जाएंगी। लकी रहे तो 3060 भी मिल सकता है, बट उसके लिए लकी होना पड़ेगा कि कोई सेल में अच्छा हो रहा हो, और कोई दोस्त हो जिसके पास SBI का क्रेडिट कार्ड हो तो धर लेना उसे। डेबिट कार्ड वाले तो बहुत मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड वाले नहीं मिलते। 70 में 3050 TI नहीं मिलता, वो क्या मिलता है फिर? 3050? अच्छा 3050 क्या बोल रहा हूँ, 4050 कुछ भी होगा भाई वो। अरे मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं सेल के टाइम बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहा। मैं प्राइम सेल आती तब 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 के टाइम की बात कर रहा हूँ, तभी मिलते हैं ढंग के लैपटॉप सस्ते में। टफ में F सीरीज मत लेना, उनकी मदरबोर्ड L है। F का L हो गया। मुझे ये बताओ, वो स्टीम का कितने का आता है?
तो स्टीम का क्या होता है वो? स्टीम प्ले, क्या है इसका नाम यार? स्टीम प्ले, स्टीम डेक 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 भाई डेक। सब तो उसी को छाप के बना रहे हैं, जितने भी हैंड हेल्ड है ना, हाथ में पकड़ने वाले, वो सब उसी की तो छपाई कर रहे हैं। हेलो चित भाई, बहुत टाइम आया, देखा क्या उनका शहर खेलते हो? मैंने अभी काफका आने वाली है तो स्टार्ट किया है, समझ सकते हो फन टाइम क्यों। इंडिया में है ही नहीं वो ऐसा मत बोलो, जहां चाहे वहां बहुत कुछ है। डेलीज हो गए, रेडिजन हो गया, टबी हो गया, और अब बाजू की क्वेश्चन से पहले आपने कभी कोई वेपन क्राफ्ट किया है? मैंने आई डोंट थिंक सो। इसी को काफ किया क्या वेपन? ये एल्बिडो का वेपन पुराना वाला। क्राफ्ट 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 क्राफ्ट। हाँ ये किया ना? नहीं, हाँ ये किया ना, मापा मारे किया है ये। लेकिन याद रखो, ये जब गैंशिन नया नया था, मापा मारे किया है, प्रोटाइप एम्बर किया है, प्रोटाइप स्टार ग्लिटर किया है, वाइट ब्लाइंड की है, और कंपाउंड बो करी है, और वो वाला वेपन कहाँ गया? डिलुक का पहला ही है ना। प्रोटाइप आर्केक किया है, क्रेसेंट पाइक की है, वो क्लेमोर भी। हाँ ये जब लाइक गैंशिन नया नया आया था तो ये एक फ्री में मिलता था, तो ये एक फ्री में मिला था, और फिर एक किसी क्वेस्ट से मिलता है ये, तो दो ऐसे ही हुए मेरे आल्टो। ये क्राफ्ट नहीं किया था ये जब गैंशिन डे 1 पे जैसे स्टार रेल में आपको वो मिला था ना लाइट कोन फ्री में, ऐसे गैंशिन में ये तलवार फ्री में मिली थी। दिक्कत ये है कि एलआई ही सिर्फ इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च है। देखो विशाल भाई, सिंपल फंडा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, आपको किस हिसाब से चाहिए। आपको सिर्फ गेम खेलने के लिए चाहिए, क्योंकि क्या है हैंडहेल्ड से आप बस गेम, मोस्टली गेम लाइक मोबाइल फ़ोन की तरह से मान लो, ज़्यादा हैंडहेल्ड वही होता है। आपको उतने छोटे फ़ोन पे अगर सिर्फ गेम खेलने के लिए चाहिए ठीक है, पर उसमें आप वैलोरेंट नहीं खेल पाओगे, आप उतनी छुटकी सी स्क्रीन पे क्या ही खेलोगे। तो देख लो क्या बना, जो आपको चाहिए सही लग रहा हो वो ले लो, क्योंकि मैं नहीं जानता आपको क्या चाहिए। आपको काफका के लिए फार्म करने के लिए स्टोरी करनी पड़ेगी तभी। हाँ मैंने थोड़ा सा खेल लिया यार, 16 हो गया हूँ। क्योंकि इट्स अ गेमिंग हैंडहेल्ड थिंग। हाँ अगर आपको आता है तो ऐसे लोगों ने तो स्टीम डेक में विंडोज 10 चला दिया, उन्हीं ने चला जिनको आता है करना ना वो। But I'll always prefer like laptop or computer over a handheld. You do you. मैंने बता दिया। इंडिपेंडेंस डे का वेट करो, इंडिपेंडेंस डे के एड-ऑन फिर सेल आएगी अमेजन पे, तब ट्राई करना अगर ऑनलाइन लेना तो। अदरवाइज जाओ ऑफलाइन किसी दोस्त को लेके अपने साथ। अबे ये कैसी अबे ये कैसे कमीशन है भाई? ठीक है भाई, भाई ये क्या कमीशन थे भाई? उसमें हीटिंग इश्यू भी होते हैं किसमें, हैंडहेल्ड में या लैपटॉप में?
होंगे तो दोनों में ही। ऐसा है कि विवेक भाई, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर विवेक भाई, लव लव। पैकेट करो 70K का पीसी लेकर, इससे अच्छा लैपटॉप। हाँ मतलब लाइक अगर लो बजट में जा रहे हो तो लैपटॉप इज बेटर। पीसी अराउंड आपको 1 लाख तक जाना ही पड़ जाता है। OMG look who is back, just a handsome sexy streamer। ऐसा क्या एक बार नियो इज ओपी। वो ऐसे झूठ ना बोले जाए, नब है नब। आई मिस्ड यू डार्लिंग, ऐसा है क्या? मैं तो यहीं पे था विवेक भाई। मैन अब ठीक है, वो जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। उसमें क्या शर्माना, रूम लुक सो डिफरेंट। हाँ हाँ भाई तभी तो बोल रहा था, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आ गया ना। ऐसा लग रहा है कि बैचलर का कमरा है बिना बेड के। मेरे अभी है, अभी मेरी बाइजू की क्वेस्ट बची है और 2 वर्ड क्वेस्ट बची हैं मेन पे। इस आईडी पे तो पूछना भी मत। बट मुझे वेट देखना है, मिस वेट। हाँ तो घर आ जाओ देख लेना। आपने थोड़ा वेट गेन किया है, देखो थोड़ा नहीं, मेरा वेट बढ़ा ही हुआ है। बैचलर का कमरा है, अगर पीछे से आंटी ने सुना तो दिक्कत हो जाएगी। वो कैमरा घुमा दो, नो यू। पीछे वाइफूस के पोस्टर लगा दो। इतना अच्छा पर्दा है, क्या दिक्कत आ रही है? वाइफूस के पोस्टर कहाँ लगाऊंगा? खिड़की पे? घर वाले नहीं छोड़ेंगे। जो बैचलर लाइफ है ना, ट्रू टू भुवन में मैंने गलती भी नहीं की थी और ये बार बार जल्दी पोर्टल खोल दिया बिना बोले। वो सिर्फ एक बार हुआ था, जस्ट वन टाइम। जस्ट वन। ऐसे झूठी अफवाहें ना फैलाएं। कितना चाहिए? 20 व्हाट द हेक। हाँ तो हुआ था ना। हाँ तो आप उसको एक बार मल्टीप्लाई बाय टाइम स्टैंड ना करें, लोगों को फिर मेरे स्किल्स पे इशू आने लगेगा। आरएमआई टाइम ट्रायल जंपिंग भाई भाई, ये कमीशन देख के मजा आ गया। ऐसे ही कमीशन रोज देते रहा करें। और विवेक भाई आप रेडी हो कल के लिए?
कल हम लोग 3D नीके खेलेंगे। इट स्क्रीन तो दिखाओ, क्या देखोगे? वही तो गंजेड़ी इम्पैक्ट है, 10 साल पुराना। देखो टाइम ट्रायल चैलेंज, इससे पक्का कोई ना कोई वो होगा जो मेरी फनौती बनेगा। ये लो याय की को हाय तिवारी जी, हेलो यू भी। कीको ओपी, कीको ओपी इंडीड। सुबह को मैंने सिर्फ नायदा पुल किया है, सेम। दैट इज ट्रू। लेकिन फॉन्टेन में सारे करेंगे। मैंने सिर्फ टिग्नारी और डेहा पुल किया, मतलब टिग्नारी उसके उसके बैनर पे पुल किया या फिर लाइक 50-50 में मिला। ये बहुत कम ही लोगों ने टिग्नारी को उसके बैनर पे पुल किया था। बैनर पे भी विद वेपन पास किया, विद वेपन तो फिर दैट इज अ गीगा चैट मूव। तीनों हो गए, आखिरी कहाँ है फिर? सारी की सारी डेस्टिनेशन रीच करनी है तो आई डोंट नीड देम फॉर डेस्टिनेशन। फिर आ रहा तेरी कमीशंस हो गए। Rolly, 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 tap away. Let's see. याओ याओ किसी बैनर पर आया जाए मुझे
ये आया के कॉन्स निकालने थोड़े साइड के लिए। सच Right now, right here. No, my sword. वाला मूव नहीं किया। On my final stand, be a monument emerge. Right now. अब गेंद बनेगा पता था। One with the force. अरे भाई मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा ऐसे। Can't see. Toma, why you bully me man like that? Right here. Don't get too close. Emerge. No, my sword. Time to act. Time क्या to act. क्या बोला? क्या ये बियर ट्रैप 2 ही मिलते हैं क्या पूरे गेम में? हाँ, वो गेम की स्टार्टिंग क्वेस्ट में मिलते हैं बस। अगर आपने प्लेस कर दिया तो खत्म। Right now, right here. क्या आपने प्लेस कर दिया क्या? One with the force. अच्छा, कोई यूज भी नहीं है उनका। नहीं, प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है उनका। काश एक ही इन्वेंटरी में। हाँ, एक कहीं प्लेस कर दिया होगा फिर तूने। Because we can use ability. ऐसे जो क्वेस्ट के लिए मिलता है, किसी यांगलिंग की क्वेस्ट में मिलता है शायद, पता नहीं, क्वेस्ट का पार्ट होता है वो। फोर्स बेटा। Add Astra. Thank you for complete. Add Astra. Add extra apple sauce. Kaching and Shingyunga. अरे कुछ जो सो रहा हूँ। सारे के सारे मेरी है तू, तुझको क्या रिक्वेस्ट बाउंड्री फर्नीचर पॉट, तो भी टाइम लगेगा। आप लक सही है।
आपका लक्ष्य ये है, बालू चाहिए थी, मिल गई आपको। हाँ मुझे कोई सपोर्ट यूनिट चाहिए थी। अब बालू एज अर्ली गेम बहुत अच्छी यूनिट है, मतलब लाइक एंड गेम भी है बट लाइक हाँ अर्ली गेम लाइक अभी खेलने में बहुत मदद रहेगी, यू नो इजी हील्स, गपा गफ टफा टफ। काफका क्या है? क्या सुनील भाई, मुझे लगा था आप मैन ऑफ कल्चर हो। डिसअपॉइंटेड एट इट्स फाइनेस्ट। ऐसा भी कोई करता है क्या सुनील भाई? कर दी ना फ्री टू प्ले वाली बात। मेरे से भी ज्यादा पुल्स लेके बैठे होंगे वो। This route. ऐसा मत बोलो, लगता है वेलकिंग डालना पड़ेगा। अरे देखो जिस दिन सुनील भाई ने चैट में आना बंद किया उस दिन उनके अकाउंट में वेलकिंग डाल दूंगा। ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहता मैं अब। ओ ऑफलाइन लाइफ इतनी बिजी हो गई क्या? If you ever. फ्री पुल गाइस, फ्री फुल। गेम प्लीज अर्ली 5 स्टार स्टैंडर्ड से, एक टिग्नारी और दे दो। सच फर्स्ट। अरे आपने आते ही नब नहीं लिखा, अब मिल जाएंगी हो ना। देखो पहले आती वो क्या करो जो एक्सपेक्टेड हो आपसे, समझ रहे हो? नब तो आप ही हो, हाँ वो तो सबको पता है। Getting wedged into my pop pads feels kind of weird. We all know that. Here's backup. Witness the power emerge. कुछ भी Right now. कुछ भी क्या है? Rain outlines your fate. सच बोलो तो कुछ भी। And shroud. I'll uproot you. उस सुनील भाई मुझे डीएम्स में तुम सबसे पूछना पड़ेगा। दलिया खा लो फ्रेंड्स ने, आज घर में पोहा बना था। राइट देखो इस चीज को वो स्निपिंग टूल से स्निप कर लो और डिस्कॉर्ड में लामा को टैग कर दो टी टाइम में। नहीं मिल गैंग मैं आपको करने को बोल रहा हूँ और किसी को करने की जरूरत नहीं है। मिल गैंग ने लिखा है तो मिल गैंग ही करेगा। Leave between dry sheets. इस चीज को स्निपेट टूल से स्निप करके टी टाइम में लामा को टैग कर दो। फिर मैं वहां पे अप्रूवल का साइन दे दूंगा। हेलो प्रणाम प्रणाम। आरंभ है प्रचंड।
कैसे रोशन भाई? हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या के पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आरंभ है प्रचंड, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज, क्या बात है, मजा आ गया वो कुछ भी। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना वीर रस का गाना है, वीर रस का। मैं क्यों आया था, मैं भूल गया हूँ। फ्रिकिंग वीर रस का गाना। ये चाहिए होगा ना इसका। कोई मूवी की है ये? हाँ ये है, इस मूवी का नाम है गुलाल। पॉलिटिकल मूवी है, पॉलिटिक्स के ऊपर दिखाई गई मूवी है। जिस समय चुनाव का समय आता है, उस समय गाना बजता है। आरंभ है प्रचंड। गुरुजी, नेम a more broken character than नीलू डेहा। सेम पिंच मिल गया। नहीं मिल गया, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। मैं उसकी स्टोरी यार कल देखी भाई, तो ब्रोकन येट ब्यूटीफुल। कौन है डेहा? वो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भैंस क्या कल नीलो क्राउन कर दी? ये बात ये क्या बिल्ली है? हाँ ये बिल्ली है। वापस करना तो कर दो। मैंने भी जब पहली बार सुना था, मैं ये क्या हो रहा है भाई गेम में।
इसको हाइड्रो वाले बबल से फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्ली है ना, ऐसे बबल्स को स्क्रैच कर देती होगी। ठीक है भाई व्यूअर्स, हाँ Check this out. Right here. I got you covered. Rain outlines your fate. Know my soul. Let me lead you. Right now. Emerge. One with the force. सारे की सारे मेरी है तू, तुझको कभी ना मैं बांटूं। सारी की सारी मेरी है तू, तुझको कभी ना मैं बांटूं। भाई वो जो इफेक्ट है ना, तुम लोगों ने वो देखा है ना, क्या नाम है, तुम लोगों ने 9 से 12 का अभी देखा जो 4.0 में आने वाला है? नहीं देखा कोई ना। तुमने वो तो देखा होगा ना कि फाउंटेन कैरेक्टर्स में फाउंटेन कैरेक्टर्स को वो एक प्रॉपर्टी मिली हुई है, न्यूमोना और ऑस्मा नाम की। मतलब कुछ फाउंटेन कैरेक्टर्स पे न्यूमोना होगा, कुछ पे ऑशिया होगा, कुछ नहीं पता। Keep up. फाउंटेन का तो बस ये तुमने जस्ट ये मान लो, हर तुमने वो देखा है ना, तुमने वो देखे होंगे ना कभी कभार अबिस में, तुमने कभी कभार देखा होगा ना अबिस में वो आते होंगे सेंटर में इलेक्ट्रो या क्रायो के पॉट्स, और उनको अगर वो थोड़ी देर में अपोनेंट को इम्ब्यू कर देते हैं एलिमेंट से। वो देखा है ना? तो उसी तरह का एक मैकेनिक फाउंटेन में आने वाला है। वो स्टैचूज के थ्रू नहीं आएगा, वो एग्जिस्ट करता है मैकेनिक फाउंटेन में। तो क्या होगा, जैसे तुम फाउंटेन में जाओगे, तुम देखोगे अपोनेंट्स अपने ऊपर कभी कभार ये जो मैंने बफ्स बोला ये लगा लेंगे, या तो तुम उससे तोड़ो इनको रिएक्शन के थ्रू, या फिर तुम्हारे पास ये जो दो मैंने बोले न्यूमोना और ऑजिया नाम के एलिमेंट्स के कैरेक्टर होने चाहिए, वो उस शील्ड को वन टैप कर देंगे। अगर लाइक जैसे ये मान लो कि अगर नेगेटिव शील्ड है तो तुमको पॉजिटिव मारना होगा, पॉजिटिव शील्ड है तो तुमको नेगेटिव मारना होगा। अगर तुम्हारे पास फाउंटेन कैरेक्टर के पास ही खासियत है,
अगर तुम्हारे पास है तो तुम उस तरह की शील्ड्स वन टैप कर सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन से तोड़नी पड़ती है। और जितना मैंने सुना है ये अब इसमें भी आ रहा है। तो मैं वही देख रहा हूं, अगर ये फ्लो 12 में आ गया तो क्या होगा। मिला कि अगर इन्होंने फ्लो 12 में डाल दिया तो क्या होगा, कि 9 में तो लोग बोल रहे हैं ये, जितना लोग बोल रहे हैं 9 में तो ये है मैकेनिक। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 12 में भी बॉसेस 12 में भी आ रहे हैं ना फॉन्टेन के कैरेक्टर लाइक एनिमीज, तो अगर 12 में भी वाले बफ्स हुए तो forced to pull Fontaine characters now. Am I right or am I right? इसमें डेली हो गया, रेजिन हो गया, टबी से भी मिल लिया था ना। और मुझे वही देखना है कि वो जो बफ उनको अपने जो लगाएंगे वो कितना खतरनाक बफ है, कि मतलब लाइक पेटू विन हो रहा है क्या। रिएक्शन से तोड़ना जिंदाबाद। फॉन्टेन के वाले बॉस देखने मुझे वाले बहुत मस्त बॉस है, लोग बोल रहे हैं वाला जो पपेट वाले बॉस है वो बहुत मस्त है, लोग बोल रहे हैं। I have to see. ओके अब ये हो गया। अब मुझे करनी है द सर्च ऑफ अ फिजिशियन। गो टू बूबू फार्मेसी। बूबू फार्मेसी हियर आई कम। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं उरिचिमारू की स्टोरी लाइन। ओके गाइस, टुडे वी प्ले ओरिचिमारू स्टोरी लाइन। एनीवन इंटरेस्टेड इन ओरिचिमारू स्टोरी लाइन कैन जॉइन मी। ओरिचिमारू हियर आई कम। You mean to say Orochimaru 6.9? Whoa. प्रणाम। मैं अगर सारे वर्ड को एप्रो करूंगा तो 1000 पुल्स मिलेंगे क्या? मुझे क्या पता, मैं कोई ज्योतिष थोड़े हूँ जो आपके अकाउंट के प्रीमोस अकाउंट रखूं और बोलूं ऐसे आपका हाथ छू के बोलूं हाँ तेरे अकाउंट में 1000 पुल है, कुछ भी। What's your name, buddy? ये तो बिल्कुल वैसे होगा कि मिल गैंग मेरे से आके पूछ रहे क्या मुझे रास्पबेरी पाई मिलेगा या फिर आउट ऑफ स्टॉक होगा। No, I'm not. My name's Ayu. मुझे क्यों तोड़ा ऐसे? Hey there, Chi-Chi. Hi, Gray. What's going on? हमेशा रेडी होना चाहिए फुकाई के लिए। You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Lille Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But आउट ऑफ स्टॉक इज रियल, आई नो राइट। So वो अभी भी अगर करेगा ना ट्राई करेगा ऑर्डर करने का आउट ऑफ स्टॉक ही आएगा। Days ago to gather some herbs for my dad,
but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Ride, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? He must mean Baizu. When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millilith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the Millilith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. कुछ मॉडल है स्टॉक में, You came to the right बट क्या वो place. बहुत महंगे We're हैं? pros at finding people. Isn't that right, traveler? ऐसा है क्या संजीव भाई? Junction can help. She has नहीं, a normal good price though. sense of smell, like a dog. लॉल. Hey, who's talking about me behind my back? Chengsheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju? Uncle Baiju. Chengsheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Uncle... Dr. Baiju. सांप मजे ले रही है. I see. And your family lives near Chingsa Village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. ऐसा My मुझे mom फील doesn't होता like है. meeting other people, especially during Lantern Ride. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. ऐसा है क्या मेरे क्या? नहीं. Is that so? Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baiju? I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of Indeed, you have सच time नहीं to join me? Sasuke. Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. You can count on us, maybe. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. अच्छा Then I'll चीची की leave ज़्यादा you to वॉइस handle the लाइन नहीं है. pharmacy. अरे मेरा 70 भी गायब है, सबका गायब है. लेकिन अगर तू सही तरीके से सस्के लिखेगा तो आ Let's जाता है. start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. The Heart of Healing. सी जैसे भुवन ने लिखा, मुझे सस्के दिख रहा है. बट आपको सही स्पेलिंग याद होनी चाहिए, जो मुझे लगता है आपकी उम्र में अब दिक्कत होगी. हाँ, वो तो आपको रिलेटेबल है, आप ही समझ सकते हो. हाँ, रिलेटेबल तो है. They searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city तभी तो folks आपको say there's बोलता no हूँ sign of PvP them खेलना either. बंद कर दो. We need to start looking further afield. But where are we going to get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baiju. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us PvP on? मत खेलो, बस गैम्बिट खेलो. Thank goodness. We were just discussing शर्म how we're करो. running out of manpower. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either.
so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. शाम को यूज भी नहीं किया था वैसे. हाँ? Just saying. हाँ? मेरा दोस्त 280 की विन स्ट्रीक पर है सीजन. So बोलो टेस्ट सम ग्रास. You will? Oh, great. We can't thank you enough. और आप Sorry we भी. weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Just saying. I Thank you mean. for trying. नहीं. अब सेंटेंस पूरा ना करो तो ही सही है. तभी बोला था सेंटेंस पूरा करने की कोई जरूरत नहीं. Dad! अरे भाई. Dad, can you hear me? Look, there's somebody Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! Dear customer, Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? उठाओ भी थी इसमें. गुरुजी फाइनली एक्सपर्ट लिए हुए. Oh, nice. Dad! Hey, Hutao! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and... my worst nightmare. अब वह कर रहा है क्या? तूने एक्सटेंशन हटा के दोबारा डाला क्या? I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Who, for saving क्या this man. एक्सटेंशन रिमूव करके दोबारा डाला क्या? You Okay. okay? मैं भी Did you ट्राई करता. recognize me? It's me, Ayu. You're... you? Who am I? Your name is Xiao Liang, and you live just west of Qingdao सर्वर Village. मतलब जो इमोट्स ऐड कर रखे थे वो दिख रहे हैं सारे? मिल गए? Doctor, remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jialiang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jialiang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? वो शो नहीं करता. Uh-oh. ओह. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. बग है वाईटी पे वही तो यार. Gosh, dinner's on us next time. Hold on a वो नहीं second. करा सर. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? नेम ड्रॉप करना था. Why not? What's the problem? Come on, Baiju. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? राम राम गुरुजी. राम राम. There are traces of god remains in Jialiang's system. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. मस्त बारिश हो रही है यहाँ. यहाँ भी लाइट चली गई. Unthinkable. I'm sorry. What? God remains? There's no need to worry, Director Who. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. ऐसा क्या मिल What गया? reason would I have to neglect a patient in need who is right there बारिश in हो रही है front यहाँ of me? पे. Besides, लाइट it is जा my सकती है late क्या? master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great uncle into this? Baiju,
Just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. बारिश मेरे इधर भी हो रही है. ये चेक करना पड़ेगा. मौसम तो बन रहा था हमारे यहाँ. Bubu Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous. इधर तो धूप है today. आज. Don't forget that we are here too. We don't let things get out of hand. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jialiang here. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake. And टी the टाइम देखो. traveler's वो स्ट्रीम के टाइम डिस्कॉर्ड नहीं खोल सकता. Please, you brought the traveler along. मेरा पीसी बोलता है ऐसा है क्या? This would have been डर a नहीं much लगता. more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Bubu Pharmacy at once. It's Frank. हाँ? तो अगेन कुछ स्टोरी से रिलेटेड है तो प्लीज नो स्पॉयलर्स. Blockages within the cardiovascular system, reduced blood flow and energy circulation. I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baiju's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. Is it a grim prognosis? No. I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and 75 की lucid पिटी again. होगी मेरी HSR पे. ऐसा करना अपना अकाउंट देना मुझे कुछ चेक करना है कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड करते हैं. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus. when I hate treating by you haven't done it patients. yet. Any क्या? distractions? क्या चेक करना वो देखना will कैरेक्टर कैसे बिल्ड करते हैं. आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं स्टोरी में. आपके पास स्कूल्स कितने हैं. Absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that आपको मेंबर something's वाले amiss. इमोट दिख रहे हैं. हाँ डीएम वर्क करो भेजता हूँ. इतना भरोसा. See you tomorrow, Baiju and Changchang. Bye for now, everyone. पीस आउट. Are you ready, Baiju? मुझे सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है. वो Ready as I'll ever be. रीलोड I'm कर. used to it by now. Come on, let's get started. रीलोड कर. All's well that ends well, huh? नहीं. You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? You mean Baiju's master? Yeah, you must be curious too, right? ट्रैश कर दिया 70 वालों ने We can find out या while YouTube Baiju's ने. busy Who treating knows? Baiju's dad. The search for a physician. Ask around for information. दोनों ने वो दोनों को ट्रैश बोला जा रहा है. ना. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. What? Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? गुरुजी एक बार बताना कोकुमी का आर्ट पूरी पार्टी को हील करता है. हाँ लाइक ऑटो अटैक करने पड़ते हैं. पूरी पार्टी हील होती है. यस Actually, don't tell me. बट Let यस me पूरी guess. पार्टी हील होती है. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. अंकिल एक सवाल. आप कौन? So, we were just a little curious about अच्छा सर का रेजिन सिस्टम मोर टाइम कंज्यूमिंग. what was हाँ like. Oh, and also, how come you and Baiju could tell so quickly that Jialian Adu? had God remains in his system? Huh?
I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods. देख मुझे नहीं defeated पता in war. नेबुला HSR का मैंने 3 दिन खेला है ain't I don't know that ask Bhuvan Well, अब 2 it सवाल is a dusty old tale चल by चल this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up. So our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify God's remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baizhu learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baizhu's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baizhu's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty अगर big कोई अभी switch. गैंशन स्टार्ट करे तो उसको कितना टाइम I have लगेगा to imagine. किस चीज में But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. अराउंड कितने फोर्स हो सकते हैं उसके If he had पास just become a डिपेंड्स regular वो कितना doctor, ग्राइंड करता है there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early डिपेंड days. करता है उसके पास कितना But कंटेंट according है to my पुराना grandpa, the और वो कितना pharmacist ग्राइंड they कर met सकता है had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against Start the से natural order of things. In what way? घिस घिस के यू नो Don't स्टार्ट know. से My grandpa भाई didn't know the सब specifics. राइट नाउ 3 साल का Didn't see कंटेंट है how भाई they गैंशन में advised स्टार्ट us से around me. He'd never tell me anything. But even अगर that कोई says खेलने to me बैठेगा that तो he बहुत definitely has something कंटेंट है to लेकिन hide. टाइम भी लगेगा One ऐसे thing ग्राइंड I do know about Baizhu स्पीड is ग्राइंड that नहीं कर he's सकता अभी कोई obsessed राइट with नाउ the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. बट इतना है आराम से लाइक वर्ल्ड में आराम से इतना प्रीमो है कि तुम कितनी 2 या 3 पीटी तो हिट कर लोगे आराम से वो भी Anyway, गारंटीड so क्या I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. गेम में भी राइट नाउ Maybe अगर तुम शुरुआत से tomorrow एंड तक सब I'll सेव figure करके out चलो what he's up to. 300 400 पुल तो हो गए होंगे After all, 300 तो मैं भी कह सकता हूँ 300 पुल तो होंगे गेम में questions 60 से अगर अब तक खेलते तो 300 पुल तो आराम से never होंगे mind. क्या कह रहा है वेट अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग 8 से 10 It's a new day. Let's go back to Boo Boo It's a new Pharmacy and check day, out it's how a new Boo Boo world, is. and I'm feeling good. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me! नहीं Yes, I remember now. Oh, are you? I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she?
Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And अरे यार Dr. भुवन Baiju's एक चीज gonna help पूछनी थी too. मुझे, जो Right now, आर्टिफैक्ट all के you need अलावा to एक do और is चीज है ना concentrate on getting जो तुम better. अपने कैरेक्टर पे लगा सकते हो, Great. दो, That's wonderful. उसमें गाचा है Can't कि नहीं? thank you enough, Dr. Baiju. My pleasure, really. It's the least I can do to Yes, honor है, my late sadly. master's dying wish. दर्द If anything, I should be apologizing to you for not making the time to नहीं, visit मतलब in all उसमें these सबस्टैट्स वाला years. गाचा है या कुछ और गाचा है? Not at all, Dr. Baiju. It's only because और कोई Jiang कैजम से स्टार्ट करेगा तो कितना लगेगा? एक महीना, What was her reason अगर वो again? पागलों की तरह खेले तो. You're still in the early stages नहीं, of 6 recovery, आर्टिफैक्ट्स हैं so उसमें, you'll वो need to ठीक है. take it easy उसके अलावा for a मैंने एक while. और चीज देखी थी जो लाइक Take it 2 हैं, slowly and सिर्फ try 2. not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo एक Pharmacy. आर्टिफैक्ट है पूरे 6 और एक अलग एक for पेज at पे 2 least the चीजें होती है, next सिर्फ 2. few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? अभी जो स्ट्रीम के टाइम तो डिस्कॉर्ड ओपन नहीं करता, How did पूरा you लैग कर जाता है accomplish मेरा. this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you मोबाइल पे wish. देखना, नॉट पीसी. Though I regret यहाँ to say मोबाइल नहीं that दिख रहा है, Boo Boo मतलब मम्मी के Pharmacy पास. cannot offer to reimburse Wang Sheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baiju. I'm not that unreasonable. Baiju looks a little worse for wear. Something's wrong. Yeah, I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Yes, of course. Everyone, please excuse Chiangsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by उसमें now. उसमें AR कितना है? 70 तक है ना? तो 55 या 55 या Why 55 must के you अराउंड में होगा. keep this a secret from everybody? गैंशी ने 45 बोलते थे, उससे You should 75 at होगा. least share your secret with one person you trust. Who's there? It's me. Why did you follow us here? I thought you were looking a little unwell. Oh, it's nothing. I just needed to get some air. उसमें अर्ली से गारंटी 5 स्टार है. What वाह, did I just say ये मुझे about पता नहीं putting था. on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. वाह बेटी, वाह. Baiju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough.
You're looking even worse now than before. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Jiangsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. He must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Go on, Baiju. Let us help you. Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. पहले 4 पीस फार्म करो, फिर एक और 2 पीस फार्म करो, फिर रोते रहो. Traveler and Paimon. Paimon doesn't think we've seen this. उससे अच्छा मैं 1 पीस देख लूं. No need to thank us. You've helped us out before. Smart choice. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Do you know where his house is? Yes. I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Qiqi to look after the pharmacy. मैं दोस्त का जिंग As सपोर्ट well में as यूज करता हूँ, investigating E3 है. Jialiang's exposure ठीक है to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. Oh. The search for a physician completes. The quest for a cure begins. इसका लग बहुत अच्छा है. Too lucky or what? हमको भी आईडी, हमको भी लकी बनना है. एक 10 पुल में 2 मिल गए भाई. देखो मुझे 2 साल लग गए थे वो गेंशिन में करने में. लेट्स सी स्टार रेल में कितना समय लगता है वो करने में. मैं यू पे खोलता हूँ, नहीं मैंने एशिया पे कर रखा है. Whoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. ये कुछ भाई कैसे है? मैं सही हूँ सैफ भाई. आज बस थोड़ा थका हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी उठा था. आज छोटी कर पाऊंगा, बट इन जनरल अभी फाउंटेन आने वाला है तो लंबी स्ट्रीम कर रहा हूँ. सब निपटाना है पीछे का पेंडिंग, क्योंकि मार्च से नहीं खेला है. और आप बताइए कैसे हैं आप? सब सही? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. और She is आप several years रेगुलर older खेल than रहे हैं, I and आपने भी also बंद कर began दिया. her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. एशिया इज बेटर पिंग. She met an herb पता नहीं. gatherer sometime during मुझे her पता नहीं यूं में travels कितनी आती है सब. and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. मुझे लगा इधर कोई खेलना नहीं वाला एशिया पे, सो ये बनाया था. उसके बाद Neither के of you साथ had ही खेलता हूँ क्या? actually met Jialiang or Ayu before all of this? मैं तो दोनों खेल रहा Jiang हूँ. Li did occasionally come स्टार back to मैंने Chenyu अभी Vale स्टार्ट to see किया. our मतलब master. मैंने But for जिस दिन गेम whatever रिलीज होता है उस दिन reason, she ओपन कर hardly लिया ever था talked ऐसे about देखने her के लिए. family. बट अभी The last काफका time आने she वाली है, visited सो us, आप तो she जानते and ही हो. Master had some sort of बस quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. I like to explore, but now whole world is 100%. कोई ना नेबुला भाई 15-16 अगस्त को कर I did सकते not हो. witness the argument myself.
Nor did Master Fontaine ever जब आएगा explain करना it to तब. me. All he would say is that should I ever encounter Jiangli or her family in the future, I should do everything in my power to help them. So Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. कोई ना नेबुला भाई मेरे अकाउंट को कर दे Even if एक्सप्लोर. my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? You ought not be quite so quick to relax your सारे guard, में इवेंट्स Paimon. रह जाते हैं तो काफका के लिए बहुत भाई वहाँ हर पैच पे 10 फ्री पुल मिलते हैं भाई. What the? मे बी लाइक कुछ भी. Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. मे लाइक Genshin Let's leave the idle chatter there for now. हर पैच में 10 पुल फ्री देते हैं भाई वो. Jiangli has lived in this house for many years. 2 पैच से प्रकाश भाई There बता must रहे be हैं something here हर that can पैच पे shed a 10 पुल little फ्री light मिलते on हैं. this whole situation. नहीं हो Let's यो. split up. ये मेरा. But if anyone finds anything, we'll examine it मतलब उसमें together. दिखा रहे थे कि हर पैच में इतने पुल मिल रहे हैं जस्ट फ्रॉम पैच इटसेल्फ कि एक पिटी बिल्ड हो जाए. मी अगेन मी हो मतलब मी हो कुछ भी मतलब हर पैच में एक पिटी तो कुछ भी. सेकंड बच्चे को मुझे ज्यादा ऐसा है क्या? इस हिसाब से तो Z तो फिर हर एक पैच पे 20 पुल देगा. कीमत नहीं होती आई नो राइट. डायरी विद चाइल्डिश हैंडराइटिंग just like my maths notebook. Traveler, Paimon, come quick. Zogi. What is this? जादू की बोतल. Chung जहर है and भाई. I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. और सैफ भाई वो पायरो लड़का पुल कर रहा है या सीधे हाइड्रो आर्कॉन. You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. मैं तो न्यू I do वाली believe the poison ऐसा है in क्या? this bottle is alive. Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of मैं तो poisons कोकोमी पुल consists कर of रहा हूँ. mother and minor loads, यारा capable of मैं sustaining a क्या करूँ? connection over vast distances. If it's a concoction मैं of this तभी kind we're dealing with, then both उसी the के लिए poison सेव in कर रहा. Jialiang's उसके लिए मतलब system मोस्टली and this सारे one फॉन्टेन here are एक्टर्स के लिए ही likely सेव minor कर रहा हूँ मैं तो loads. भी. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison सेव can करके बैठा हुआ manipulate मैं the फॉन्टेन source के लिए. to indirectly control the poisoned ऐसा क्या भुवन? individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear to a varying extent the call of the source. The call of the... फॉन्टेन के एक्टर एचपी बेस लग रहे हैं. Back when आर्कॉन तो होने Jialiang वाली went है. off, maybe that explains where he was heading. कैक्टस का देखना पड़ेगा. आर्कॉन तो है. तो कुछ ना कुछ एचपी ड्रेन मैकेनिक आने वाला है. Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the I have poison's Kokomin 2 key ID. ingredient. Let's see कि the मेन पे mother 4th विन स्टिक हो जाए. ऐसा है क्या? This is getting crazier. नहीं and मैं एक ही crazier. आईडी में खुश हूँ What कोकोमी kind से. of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment,
the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean... मेरे को सब में जबरदस्ती मिलती है वो पुल तो आप ही कर रहे हो. Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying... पर अर्ली It was Jiangli? पुल तो आप ही कर रहे हो. Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiangli does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jia Liang about it once he has made more progress in his recovery. Do you know a method to neutralize the poison? Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor load She loves me a lot, I guess. mother load is purged. So if we can find अब and destroy आप ऐसा the सोच source रहे हो of तो these god सोच लो. remains, the poison will leave Jia Liang's system मैं मना नहीं without करूँगा. the need for any further treatment. Do you know anything about god remains in Qingsa village? I only heard the rumors. Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Adaptize. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. Whoa, what? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Strange, Baiju has a weak constitution. And didn't his master pass away at early age? Ugh, Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Changsheng, you're just a pain in the neck! This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there Pain any in the way at neck. all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are, if it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. I do have someone that I can call. Oh, वो भी आ रहा क्या जाओ को बुलाएगा ये? What? Yeah. Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. जाओ को बुलाएगा? Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. जाओ सब होने वाला है. जाओ, are you there? You called? भाई साहब टीपी करता है भाई. Gets Paimon every time. Aren't all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. It's you. Baiju of Boo Boo Pharmacy.
I do believe I've had the pleasure before. The lantern rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once शीर्ष before. नीचे टीपी कर लिया. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Let me explain. So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Qingce village. A vile monster known as the Che once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Qingce village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Che is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I see. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name. Be sure to call my name again. Thank you. Nothing. Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Shell for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we can find the cave... Master, there's a problem. Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't panic. Just catch your breath and tell me everything. It's Jiaoliang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now. Okay. काश हम भी जाओ की तरह टीपी कर पाते. ओह, हम कर सकते हैं. We get story hacks for TPEs. Indeed. Indeed, la. Dad, what's wrong? Dad? Don't be scared. Dr. Baishu will be back soon. How is he doing? Dr. Baiju, you're back! My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. When Gwei left, he was still conscious. But now... Gwei, please take Jiaoliang Simulated universe जैसी चीज Genshin Impact में भी होनी चाहिए.
Don't worry, Ayu. I will cure your father. Baiju's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? Is there really no other way to save Jialiang? Oh. Oh. How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not gonna suddenly collapse again, are you? Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baiju? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Sus. Oh, really? Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. Speaking of which, has there been any word of her whereabouts yet? No. Nope. The Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany Ayu to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baiju in person once he's finished resting. Traveler, Baiju hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Do you think he... Let's go check up on him. Huh? Hey, wait up! Huh? You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baiju's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All right. Surely he hasn't. There's no way he could have just... Lock. Who's talking behind our backs again? Baizu! Changsheng! Are you both okay? Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis. Jialiang is in fact suffering from more than one ailment, and as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him,
He'd still be sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. Though it was created from God remains, this formula is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. So that's why. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he relied upon this medicine, the more resistant his body became to it. Jiang Li had to concoct ever greater quantities to ensure its continued efficacy, or he could have still perished at any moment. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiang Li has exposed herself to them. I fear that the situation is just as that Adeptus described. In an effort to save Jialiang's life, Jiang Li has abandoned all regard for her own safety. I never suspected that even Jiang Li would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps this is the inevitable course of fate. To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible. Whatever the cost may be. Fate. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jialiang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiang Li is. Her regular exposure to God remains over such a long period will have been catastrophic for her health. And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. It's me. भाई ये Genshin की स्टोरी दे रहा है यार. कल देहा की भी, अब इसकी भी. It's Jialiang! Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baiju, please You let me come with की you. आखिरी पे करनी चाहिए थी भाई. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiang Li's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me. Now every time Lark she goes again. to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. For your own safety, you should stay here and rest. No! We're out of time! We have to go now. Right now. Before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you sure you're prepared for that? I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. Then follow me. Chichi. Dr. Baiju,
Are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. I hope it works. Dr. Baishu? Do you mean... Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. The quest for a cure. The formula of a miracle. ऐसा क्या वो सस्के तो है That strange feeling is back. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's this way. Huh. Yes, I'm sure of it. I feel a dull ache in my heart. This must be the way. आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे This बढ़ो place feels familiar. पहुंच गए I think I've been here before. There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Jialiang, are you okay? Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. Why not? Entanglement of past dreams. Wow. I think पहुंचने वाले हूँ मेन बॉस पे डंजन पे यस This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear immature and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders that dug this tunnel. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? Monsters. I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, curses. Why can't I remember what she said? Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. G8 for
Splendor. इसको भी noblesse. Huh? Mind the side effects. Witness the power of Gugwa. Dissipate. A bitter pill to swallow. Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. I believe this sensor was used to burn a monster-repelling incense. A monster repelling incense? You sure? 'Cause we did run into that group of monsters just now. The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life. That's right. This sensor, it belongs to Jiang Li. Yes, this was the place. This is where I told Jiang Li to give me the poison. I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. मुझे अब सस लग रहा है भाई. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Which quest is this? Baiju की story quest. Safpa. Very, very handsome streamer. Thank you. ये वाली. Doesn't see any barrier-breaking mechanisms around here. There are tracks here.
and it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us? लामी कहाँ है? IIT की तैयारी. Gothic. Ush. Ush. Easy. पैसा ही पैसा. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. The doctor will see you. Our bond is strong. A bitter pill to swallow. Ooh. Whoosh. Whoosh. Whoosh it out, whoosh it out. Awesome. Okay. Okay, game. Oh, boss आ गया. Zhongli! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. Mind the side effects. Taking a turn for the better. A 5-man team. Dr. Baiju, how serious is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. So, If the source is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control.
So, if it stops working... Dead. Oh no. Are you saying... Yes. Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baizhu, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baizhu, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... Can't be thinking about that again. But what would be the point of that? Dr. Baizhu, I'm all too aware of the dangers of god remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiangli have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see how you grow up is already a great blessing from Rex Lapis. Hello, Yogesh bhai. If my choice can bring Jiangli back, then even if I die... Jialiang... After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baizhu, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment, that's all. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang... Baizhu, Changsheng... I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiangli! What's the point of it all? All we can do right now is honor Jiangli's decision and bear witness. I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come.
Do what you must. As you wish. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch how you grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. ये बाइजू की है. How I would love to hear your voice one last time. Jialiang! 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 Dad, are you awake? ये पक्का हुटाओ ने बचाया है. Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baiju, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? Chi-Chi. That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I'm as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Leave it Leave to it to you. you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingsa village? And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. I know someone was listening in on that conversation. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once. But apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jia Liang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be.
Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad. When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good. Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Oh my. Traveler, Paimon. I'll catch you all another time. Oh, is she finally gone? All's well that ends well. Oh my. Yes, Paimon. क्या डरती है चीजियों से? To celebrate this hard-earned family reunion. क्या डरती है चीजियों से? Such as Paimon idea of celebration can only mean one thing. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. This was a hard-won meal. Maybe I'll whip up something up to it. Been a while. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! Wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baiju, Changsheng, would you mind if we took this conversation outside? The formula for a miracle. Now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm listening. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, Don't forget. to... Yes? Go on. Don't forget to... I forgot. I forgot. Chichi being Chichi. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changsheng, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. That's why we were like right. Chichi. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baiju. One night. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Exclamation mark top. Did you try out some of the poison? कबाब के लिए नहीं है. Awards के लिए sir. Awards के लिए, कबाब्स के लिए नहीं है.
कबाब चेंज होते रहते हैं ना. मैं चाहूँ तो अभी आपका 0 कर सकता हूँ. Sooner or later. Life Force isn't the only thing that Changsheng's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its Whoa. properties. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, top any 5. हाँ वो remaining top 5 poison in hours me है, will hours. have कबाब already नहीं है. dissipated. Hours है. But you took such a huge risk. Hour का दिखाता है If वो. we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position Exclamation mark to criticize top you league for this. top exclamation mark top 5 The reason league I left our ranks क्या था? master and went into hiding all those years ago नहीं ये was दिखता that है he बस. was getting old. उनका And नाम I और didn't उनके want कितने to use घंटे up हैं. any more of his own life force to treat my husband. But in the end, यही है. how were my methods any different? I risked मैं one परसमेश से life पूछ to लूंगा save लेकिन यही another. है. एक ही पर ये And then परसमेश ने ऐड you किया था. tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, haven't नहीं given away कबाब्स का our भी था. all for the sake था of others? एक मिनट रुक. To fight relentlessly against the देखता मैं. natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. मैं देखता परसमेश We ने are ऐड किया होगा तो मैं doctors, देखता हूँ. Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Baizhu, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changsheng to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that some of them I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? That's why वो I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from देखा. Chenyu Vale believes in the same thing. ब्रेक्स के 3 लाख विजार्ड वॉरियर के 14. Mom, come and join us. The देखा traveler अनिल. taught me a load of new recipes and said even Dad will be able to taste बोला था them. मुझे याद नहीं है साले Let's का try कमाल. them out. मिल गया एक ने. Yes, darling. एक्सपेरिमेंट करके Mom will be निकाल there दिया. in just a second. ब्रेक्स के 0 कर दूं क्या? Slow down. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. कल भी बोला था ब्रेक्स के 0 कर दो ना. वो मैं तो चाहता उसके 0 करके जितने उसके आपको दे दूं बट ठीक है 0 करता हूँ उसके. Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? ऐसा है क्या? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Zhang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. ऐसा है क्या? I'm ready. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined.
Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. So that's why ये लोग इतने weak हो जाते हैं. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patient's? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. Sheesh. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with तभी योहेमिया best girl है. So, Baihu, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you
already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease A a disease. disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Chengsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? You have to become immortal yourself. Precisely. पूरे pass I किया. will be Chengsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baiju. But isn't wanting to have it all what makes us human? Indeed. For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. For once, Paimon just does not know what to say. Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk for Changsheng and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. Leave some gruff from me. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? And here ends the heart of healing. और इस तरह सारी स्टोरी क्वेस्ट निपटा दी. ओ भाई साहब. वो खाना है क्या? खाना प्लीज. ओ नो खाना. तो अब क्या क्या बचे हमारा. अरे हाँ, वो अब मैं वो खोल पाऊंगा ना. कल नहीं, परसों खोल पाऊंगा. वो परसों आई थिंक सो कावे का वो खोल पाऊंगा. अब सुनो, जहाँ आप लाइक मोस्ट प्रॉब्ली कल करूंगा. मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज नींद ले लेता. कल अब बची वही है जो डेजर्ट की क्वेस्ट है, कल निपटाऊंगा. आज नींद ले लेता मैं. चलो गाइस, आज छोटी स्ट्रीम कर रही है, सिर्फ 3 घंटे की. मैं आपको थोड़ी झपकी लूंगा. अपने एल्बिडो दिखाना मेरा. एल्बिडो, सिनेबार स्पिंडल, 4 हस्क, 9-6 फ्लावर. क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, फ्लैट डिफेंस परसेंट, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, डिफेंस परसेंट, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट. थोड़ा सा ER की जरूरत होती नहीं है. जियो डैमेज बोनस, डिफेंस, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट. ये बहुत गंदा पीस है. हाँ भाई, पीस इतना अच्छा है बट एल्बिडो के लिए घटिया है. पिटियन प्रीमोस कितने हैं? पिटी है मेरी 9 की. 9 है ना. हाँ. और मेरे पास 571, 77, 20, 23. 77, 3, 80, 20, 90. 30 इधर दे दो.
660 पुल्स। Osmanthus. और अभी क्या क्या बचा है? अभी डेजर्ट के ये 2 रीजन बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, और आई थिंक सो 3 हैंगआउट बचे हुए हैं, और डेजर्ट की स्टोरी क्वेस्ट बची हुई है डेजर्ट की। और अभी इवेंट शुरू भी नहीं किया है। आपने 2-3 मंथ में डेली कमीशन एंड इवेंट भी नहीं किए? नहीं, इवेंट किए, डेली कमीशंस नहीं किए। इवेंट करता था मैं, डेली कमीशंस नहीं करता था। 3 महीने से इवेंट्स नहीं किए थे और डेली कमीशंस नहीं किए थे। डेली कमीशंस और रेजिन करना मैंने बंद कर दिया था। इवेंट आखिरी दिन आके निपटा के भाग जाता था, क्योंकि इवेंट से ही प्रीमोज मिलते हैं। तीन महीने पहले ही 500 प्लस थे। हाँ, लेकिन नाहिदा के टाइम मैंने 100 पुल्स उड़ाए थे और काजुआ के टाइम 70 पुल उड़ाए थे। जब नाहिदा C2 करी थी तो 100 पुल्स उड़ाए थे उस पर, और जब काजुआ पुल किया था तब 70 पुल उड़ाए थे। तो इस पे भी 170 और ऐड हो सकते थे। नहीं, नाहिदा और काजुआ पे पुल किया था ना मैंने। 100 पुल नाहिदा पे लगे थे, 70 पुल काजुआ पे लगे थे। क्योंकि वो 2 पुल किए थे ना, लगाए 70 और 4, 1, 5, 6, 7 उतने ही होते। याद है वो क्ली वाले पुल्स? अरे मेरी तो 30 पे आई थी क्ली, अगर आप मेरे से कह रहे हो तो। Osmanthus wine tastes the same. मेरी क्ली 30 पे थी भाई। These bombs so heavy. 30 में निकाली थी क्ली। भाई मैंने तो भाई मैंने जो क्ली पुल करते हैं, पहले सैंड से डिलुक निकला, क्ली भी ट्राई करते हैं, वो 30 पे ही टपक गई वो। ओके, सैंडल पे तो काफका के लिए आया हूँ, काफका निकालूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी उस पे वाली पिटी हिट करी थी, वो जो स्टार्टर बैनर वाली पिटी है वो हिट करी 50 पुल, और उस पे वो निकली बायलू में नाम, बायलू निकली, तो मेरी हीलर हो गई। इस बार का अभी मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। इस बार का तो क्या सीन है ना, इस बार का हार्ड इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो इससे पहले करके आए हो वो बहुत ही गंदा था। दैट्स व्हाई इट्स नॉट कि ये हार्ड नहीं है, जस्ट इससे पहले वाला बहुत ही गंदा था, तो उसके मुकाबले गंदा नहीं है। सिंपल है, एक साइड 2 बॉसेस हैं, एक साइड एड क्लियर है, और वो तो पिछला तो बहुत दर्दनाक था। तो चलो गाइस, मैं चलता, थोड़ी झपकी लेता, बहुत नींद आ रही है बताने क्यों। जितने भी लोग आए, रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम। मैं आप लोगों से कल मिलूँगा इधर 12 या 1 बजे कह रहा हूँ, होप सो कल, और कल सारी क्वेस्ट फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी कितने दिन बचे हैं? आई थिंक अभी 1 महीना हमारे पास है फॉन्टेन को। फॉन्टेन तो 15, 16, 17 के अराउंड टपकेगा। मुझे एग्जैक्ट डेट देखनी पड़ेगी, बट या तो 16, 17 के अराउंड टपकेगा फॉन्टेन। अभी कितना बचा है इसमें? 5 दिन बचे हैं, नहीं 6 दिन मान लो, 6 दिन बचे हैं, और नए बैनर 21 का होता है, 26 दिन। हाँ, 15, 16 या 17 इसके राउंड आएगा। चलो गाइस, इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। टिल देन स्टे क्लासेस, स्टे हेल्दी, गेमर्स फ्रॉम साइनिंग आउट।